Hello, literature lovers. Welcome to LittWit Club. Hope you all are doing great. And today we are going to discuss Walter Delamere's The Listener. ओके द लिसनर थोड़ी सी गोथिक पोएट्री है. इसको वॉल्टर डिलामेर ने 1912 में लिखा था. उनके कलेक्शन का नाम था द लिसनर एंड अदर पोएम्स. एक ये नैरेटिव लिरिक पोएम है जिसमें 36 लाइन्स और इरेगुलर राइम स्कीम है. कहीं कहीं आपको ये राइम स्कीम देखने को मिल जाता है. ए बी सी सी बी. सिंगल स्टेंजा है, दैट मीन्स इंजैबमेंट होगा. पूरा ऊपर से नीचे कंटिन्यूअस एक स्टोरी टाइप की कुछ होगी. नैरेटिव पहले ही हमने बोल चुका है. इसका टोन मिस्टीरियस है, एरिक और मेलैंकोलिक है. थोड़ा सुपर नेचुरल और गोथिक रोमांटिसिज्म से ये काफी ज्यादा इंस्पायर है. तो बैकग्राउंड अगर इसकी हम बात करें तो वॉल्टर डिलामेर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिक पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, स्पेशली देयर फोकस ऑन मिस्ट्री लिटरेचर एंड ह्यूमन सोल. इन सब के ऊपर ये फोकस करते थे. इस वजह से काफी इन्फ्लुएंस थे इनसे. ही आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय विक्टोरियन घोस्ट स्टोरीज. हाँ, विक्टोरियन नॉवलिस्ट कुछ ऐसे भी नॉलेज रहे हैं. मैरी शैली जिनका जिसमें से एक है फ्रैंकेनस्टाइन वगैरह, जो कि घोस्ट फिक्शन है. फिर उसके साथ ही साइकोलॉजिकल फिक्शन, इन सब से भी काफी ये इन्फ्लुएंस रहे हैं. हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस वर्ल्ड्स बिटवीन द लिविंग एंड द डेड इज द सेंट्रल टू दिस पोएम. ठीक है. सो अक्रॉस द वर्ल्ड एक कम्युनिकेशन जो हो रहा है लिविंग और नॉट डेड के बीच में, वैसा ही कुछ पोएट्री हमें ये देखने को मिलती है. अगर हम इसके थीम की बात करें तो सबसे पहले जो थीम इसमें हमको आइसोलेशन और लोनलीनेस मिल जाती है. एक ट्रेवलर है जो कि एक काफी से इंटायरली अलोन इन अ वास्ट एम्प्टी वर्ल्ड. एक बहुत से बड़े फॉरेस्ट में वो जा रहा है और वहां पे वो अचानक से एक घर देखता है और उस घर को वो नॉक करता है और कोई भी आंसर नहीं आता है. हाँ, तो हिज अनआंसर्ड कॉल एम्फसाइजेस सॉलिट्यूड एंड ह्यूमन नीड फॉर कनेक्शन. तो इसमें एक ह्यूमन नीड, हर एक इंसान कहीं ना कहीं अकेला है और वो एक कनेक्शन चाहता है. द सुपर The poem is steeped in mystery, with the ghostly listeners and the haunting silence contributing to an eric atmosphere. So supernatural elements वगैरह भी हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें जो listeners हैं वो हमें रियलिटी में हमें पता नहीं चलता कि कौन है. तो एक घोस्टली टाइप का. बट पोएट है जो वहाँ पे एक ट्रेवलर है, उसे लगता है उसकी बात कोई तो सुन रहा है. तो देयर इज सम मिस्ट्री इज देयर ऑल्सो. नाउ अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एंड लॉस्ट कनेक्शंस, ये भी आपको एक थीम दिख जाता है. द लाइन टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर. तो उसमें एक लाइन है कि टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर. सो वो 2-3 बार गेट खटखटाता है उस घर का और कोई आंसर नहीं मिलता है. तो वो ऐसे ही बोलता है कि टेल देम कि मैं आया था और उस पे भी कोई आंसर नहीं मिलता है. सो सजेस्ट ब्रोकन कम्युनिकेशन और फील्ड मीटिंग पॉसिबली विद स्पिरिट्स और डेड पीपल. तो उन लोगों से मिलना चाहता है जो कि मर चुके हैं, क्या वो स्पिरिट्स हैं. ओके, तो उनसे कहीं ना कहीं उसका कोई अनफुलफिल्ड प्रॉमिस रहा होगा, कोई जिससे वो कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं हो पाता है. मिस्ट्री एंड एम्बिग्विटी, मिस्ट्री और बहुत ही एम्बिग्युअस पोएट्री है. रीजन क्या है? द पोएम ऑफर्स नो क्लियर एक्सप्लेनेशन. ठीक है. हु इज द ट्रेवलर, नहीं पता है हमें. हु आर द लिसनर्स, ये भी नहीं पता है. व्हाट प्रॉमिस वाज मेड, ये भी नहीं पता है. तो हम पोएट्री पढ़ रहे हैं और ये ओपन एंडेड, ठीक है, पोएट्री लगती है, लेकिन इसमें बहुत ही डीप और इंटरप्रेटिव रिचनेस भी है इसमें. आप अपने हिसाब से ट्रेवलर, लिसनर और प्रोमिसेस को डिसाइफर कर सकते हो. सो इसका अगर हम एक्ट वाइज समरी आउटलाइन देख लें, सो द फर्स्ट सेक्शन कह लो हम, अगर इसको डिवाइड करें तो अराइवल है. अराइवल में क्या है? इज देयर एनीबडी देयर, सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलाइट डोर. सो एक ट्रैवलर है, वो अराइव करता है एक लोनली से हाउस को, जो कि बहुत ही डीप फॉरेस्ट में है, और रात में वहां पे वो नॉक करता है, किसी को बुलाता है, लेकिन कोई उसमें से आता नहीं है. हाँ, सेटिंग द सेटिंग इज एरिक साइलेंट एम्प्टी सराउंडेड बाय फॉरेस्ट. तो उसकी सेटिंग काफी डरावनी है, थोड़ी सी स्पूकी बोलते हैं ना, या अनकैनी टाइप का है. थीम्स आर आइसोलेशन, एंटिसिपेशन और मिस्ट्री से भरा हुआ है पूरा. इस पहले हम कुछ लाइंस में देखते हैं. फिर द लिसनर्स इंट्रोड्यूस, कुछ लिसनर्स को हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि रियली में है कि नहीं है ये हमें नहीं पता है. बट अकॉर्डिंग टू द ट्रैवलर देयर आर समवन इनसाइड द हाउस हु आर लिसनिंग टू हिम. बट रियलिटी में पोएट्री में कहीं भी उन लिसनर्स की बात हो नहीं रही है. हाँ, वो बोल रहा है कि हाँ लिसनर्स हैं. सो एंड ही फेल्ड इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस, देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई. ओके, सो देयर इज समथिंग उसे अंदर से महसूस हो रहा है, और वो उनके आंसरिंग उसको नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन उसको लग रहा है देयर इज नो रिस्पॉन्स विद इन, फ्रॉम विद इन. तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, येट ही इट्स इम्प्लाइड दैट समवन और समथिंग इज लिसनिंग. कोई तो लिसन कर रहा है, कुछ तो उसको सुन रहा है. इंट्रोडक्शन ऑफ फैंटम लिसनर्स.
घोस्टली प्रेजेंस इनहेबिटिंग द हाउस, ठीक है, उसे लग रहा है कोई तो है, फैंटम जिसको हम नहीं जान रहे हैं, जो कि उसको सुन रहा है। टोन बिकम्स हॉन्टिंग एंड सररियल, थोड़े से हॉन्टिंग टाइप का हो जाता है टोन इसका। ट्रेवलर सेंस देयर प्रेजेंस डिस्पाइट द साइलेंस, और ट्रेवलर को लग रहा है कि देयर आर समवन हु इज लिसनिंग टू हिम, ही कैन सेंस देयर। नाउ अनसीन प्रेजेंस भी देखेंगे, बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स दैट dwelt in the lone house there, और उसे क्या रहता है कि केवल कुछ ऐसे ही फैंटम लिसनर्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, घोस्ट से रिलेटेड हैं, जो कि इस घर में रह रहे हैं। द लिसनर्स आर डिस्क्राइब्ड इन अ ग्रेटर डिटेल, साइलेंट स्पेक्ट्रल फिगर्स। हाँ, वैसे कुछ साइलेंट और बहुत ही स्पेक्ट्रल फिगर्स हैं, वो वैसा देखने को मिल रहा है। दे डोंट स्पीक बट आर रियली बट डीपली अटेंटिव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रैवलर कि वो वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन काफी अटेंटिव होकर उसकी बातों को सुन रहे हैं। द हाउस सीम्स सस्पेंडेड इन टाइम, इनहेबिटेड बाय दीज फैंटम्स। नहीं, अब इस हाउस में बहुत दिनों से कोई नहीं रह रहा है, तो जिस वजह से यहाँ पे ये फैंटम्स रहने लगे हैं। विविड इमेजरी वोक्स अ वर्ल्ड बियॉन्ड द नेचुरल। तो एक इमेजरी जो है वो इस वर्ल्ड से बियॉन्ड की चीजें दिखा रही है। द ट्रेवलर रिमेन्स अनअवेयर ऑफ हु और व्हाट दे आर, और हमें पता नहीं चलता है कि वो कौन है या क्या है वो। द ट्रेवलर्स मैसेज, अब वो लास्ट में वो एक मैसेज देता है कि टेल देम, किसको, वी डोंट नो, एंड नो आंसर, एंड नो वन आंसर, और कोई आंसर, दैट आई केप्ट माई वर्ड, कि मैंने अपना बात रखा। तो एक देखो यहाँ पे तीन बातें, टेल देम आई केम, उनको बता देना कि मैं, किनको, नो आइडिया, नो वन आंसर, किसी ने आंसर नहीं दिया, किससे वो आंसर चाह रहा है, दैट आई केप्ट माई वर्ड्स, और कि मैंने अपने प्रोमिस को रखा। सो द ट्रैवलर डिसअपॉइंटेड बाय द साइलेंस लीव्स अ मैसेज, तो ट्रैवलर जो कि वहां पे नॉक कर रहा है, उसने एक मैसेज छोड़ा और वो वहां से चला जाता है, क्योंकि कोई उसका आंसर नहीं दे रहा है। He asked the listeners to convey that he kept his words or came as a promised, कि उसने कोई प्रॉमिस किया होगा आने का, इसलिए वो वापस आता है। There is a hint of unfulfilled duty or a broken connection, तो ये एक broken connection और unfulfilled duty को दिखा रहा है। Adds to the mystery, और ये मिस्ट्री को और ज्यादा गहरा कर रहा है कि what was the promise and who it was made to, और किसके लिए वो प्रॉमिस किया गया था, किससे वो प्रॉमिस किया था। These things are the mystery. Okay. Now the departure. They heard his footprints upon the stirrup and the sound of iron on stone. So the traveler turns and departs. The listener remains silent and only hearing his horse movement. और ये उसके horse के movements को उससे पता चलता है कि वो वापस जा रहा है. The poem ends in the silence with which it begins. जैसे वो start हुआ था silence में, वैसे ही खत्म भी हो जाता है. Reinforced themes of disconnection, mystery, haunting, stillness. ये themes हमको वापस से देखा जाता है. सो पोइटिक डिवाइसेस की अगर हम इसमें बात कर लें, तो एलिट्रेशन कहीं कहीं हमें देखने को मिल जाता है, साइलेंट सर्च, इमेजरीज हमें देखने को मिल जाता है, मूनलाइट, फॉरेस्ट, हॉर्स के मूवमेंट, ये सब चीजें हमें काफी ज्यादा पिक्टोरिकल लगते हैं। पर्सोनिफिकेशन भी है, सर्च शॉर्पली बैकवर्ड, ठीक है, वापस वो पीछे जा रहा है। इंजैपमेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको कि लाइन्स फ्लो विदाउट फुल स्टॉप्स, एडिंग टू द सस्पेंस, ठीक है, तो कंटिन्यूअस लाइन है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, तो एक कंटिन्यू, एक कह लो कि एक सस्पेंस ऐड हो रहा है इसमें। और सिंबलिज्म की बात करें तो डोर एक सिंबल है, जो कि थ्रेशोल्ड है बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो कि ट्रेवलर है, एंड द डेड, जो कि उस साइड लिसनर्स हैं, तो कह सकते हो। फॉरेस्ट हाउस, अ प्लेस ऑफ फॉरगॉटन मेमोरीज और सबकॉन्शियसनेस, उसका एक सिंबल हो सकता है फॉरेस्ट हाउस। द लिसनर्स घोस्ट है, मेमोरीज है, एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, अपने से भी वो बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर का सेल्फ उससे बात नहीं करना चाह रहा, तो दीज आर द सिंबल्स इन। नाउ कुछ की लाइंस देख लेते हैं, जो कि हमने पहले भी देखी है। इज देयर एनीबॉडी देयर, सेड द ट्रैवलर, तो ये द ओपनिंग लाइन और टेंशन और मिस्ट्री को वो दिखा रहा है। बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स दैट dwelt इन द लोन हाउस देन, सो ये भी हमने किया कि वहां पे अब उस हाउस में जो फैंटम लिसनर्स रह रहे हैं पूरे घर में, इंट्रोड्यूस द एरिक सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर, सो ये uh, एक ब्रोकन कनेक्शन और मिस डेस्टिनी को भी दिखा रहा है। So coming to the MCQs, the very first question is, what genre base describe the listeners? Whether it is a war poetry or dramatic monologue, or ghost, or gothic poetry, allegorical narrative. तो हमने देखा है कि ये ghost poetry है. What does the traveler knock? Traveler किस चीज को knock कर रहा है? तो whether it is a church door or castle gate, a moonlight tower, a lone house in the forest. तो एक छोटा सा घर है फॉरेस्ट में, उसके दरवाजे को नॉक कर रहा है. What is the atmosphere of the poem? पोएम का टोन या एटमॉस्फेयर कैसा है? वेदर इट इज जॉयफुल और ट्रम्पेट, मिस्टीरियस एंड हॉन्टिंग, रोमांटिक एंड पैशनेट, आयरोनिक और ह्यूमरस, तो इट इज मिस्टीरियस एंड हॉन्टिंग.
What poetic device is most prominent in the lines? Is there anybody there? तो इसमें कौन सी poetic device देखने को मिल रही है? Whether it is irony, rhetorical question, paradox or personification. So there is a rhetorical question. Who are the listeners in the poem? Whether they are poets audience, people inside the house, supernatural beings of ghost, the traveler's companion. So they are supernatural beings because we don't know who are they. What time of day is the poem set in? Whether it is bright morning, dusk, midnight or noon. So moonlight है तो moonlight कब होता है? Midnight में. What effect is created by the repeated silence in the poem? बार बार silence की बात हो रही है, repeat कर रहा है. Whether it shows the confusion, tension and suspense, laughter or action and movement. So it creates tension and suspense. What is the structure of the poem? Whether it is in free verse with no rhyme, sonnet form, rhymed couplet, iambic tetrameter with regular rhyme. So it is iambic tetrameter with regular rhyme. What does the traveler leave behind after speaking? A message, a letter, a flower or a symbol carved on wood. So simply एक message छोड़ के जाता है ना कि I kept my words. Which word best capture the tone of the poem? Whether poem is humorous, reflective, eric or casual. So it is very eric, spooky, horror. What literary movement is the listeners often associated with? Whether it is modernism, romanticism, surrealism, or symbolism. So it is, there are very much symbols in there. The phrase phantom listeners suggests curious onlookers, ghostly or non-human presence, people hiding inside or imagery friends. So phantom listeners is for uh, ghostly or non-human presence. Which sense is primary evoked throughout the poem? कैसा सेंस है? Whether आपके किस सेंस को वो टारगेट कर रहा है ये पोएट्री? Whether it's taste, sight, hearing or touch. Hearing उसमें साउंड की नॉक की बात हो रही है, हॉर्स के पैरों की आवाज हो रही है. So this evokes your hearing sense. What is not a major theme of the listeners? लिसनर का मेजर थीम क्या है? डेथ नहीं है, एलिनेशन, वॉर और कम्युनिकेशन. इट इज वॉर जो कि नहीं है इसमें. What is the natural imagery is used in the poem? So whether it is forest and moonlight, river and lakes, mountain and snow or sea or sky. So forest and moonlight की बात हो रही है इसमें ना, तो ये natural imageries इसमें use है. How many times does the traveler speak in the poem? So once, twice, thrice or 4 times. So he speaks 3 times, knocking and these things. What might the empty house symbolize? So whether it is religion, war, rejection and absence, political change. So it shows rejection and absence. Which line is repeated in the poem? But only a host of phantom listeners tell them, I came and no one answered. Is there anybody there? Stood, listen in the quiet of the moonlight. So इसमें बार बार ये लाइन जो है कि बार बार रिपीट होता है कि is there anybody there? What sound is mentioned after the traveler speak? So whether it is barking of the dog, howling of the wind, the echo of his wife's ticking of a clock. So this is howling of the wind. What is traveler's emotional state? So whether he is angry, nervous, calm but expectant, enthusiastic. So he is very much calm and expectant. The setting of the poem can be described as busy and populated, noisy and chaotic, remote and silent, urban and industrial. So it is in the forest now. So that is it is remote and silent. The poem's ambiguity lies in poem इतना ambiguous क्यों है? Who is the traveler? Why he is knocking? Who the listeners are or all of above? तो simply हमें नहीं पता है traveler कौन है, किस लिए वो knock कर रहा है और listeners कौन है, तो ये all of the above होगा. The silence surges softly backward is an example of, हमने बात किया था ना साइलेंस सर्च, तो यहाँ पे एलिटरेशन भी है और साइलेंस जो है कि वो बैकवर्ड जा रहा है. सो ये पर्सोनिफिकेशन भी, एलिटरेशन एंड पर्सोनिफिकेशन.
The traveler's purpose seems to be seeking refuge, delivering a message, reclaim land, or searching for treasure. So he wants to deliver some kind of message. The moonlight in the poem symbolizes. So whether it symbolizes chaos, reason, mystery and isolation, or warmth. So it simply symbolizes mystery and isolation. How does the listeners respond? Listener का response कैसा रहता है? तो whether it is they shout from inside, they remain silent, they open the door, they run away. So they remain silent. What base describes the ending of the poem? Closure and resolution, open-ended and enigmatic, romantic fulfillment, or violent confrontation. So it is open-ended and enigmatic. The traveler's horse is unmentioned, symbolic of wildness, nervous stamping inside the house. So he is nervous and stamping. What is the tone of the traveler's final speech? Is it vengeful, sad and resigned, joyful and loud, angry and bitter? So he's very much sad because no one answered his knocking at the door. Walter Delamere's writing often focuses on urban life and politics, nature and mythology, dream and unconsciousness, technology and future. So his writings often focus dreams and unconsciousness. The style of the poem can be described as plain and factual, lyrical and suggestive, scientific and logical, satirical. So it is very much lyrical and suggestive. The line, the windows were blank, suggests house is empty, light is standing through, curtains are blowing, house is on fire. So it suggests that house is empty. Smooth on the drowsy forest conveys the gunshot, a loud knocking disturbing the silence, bird flying away, thunder. So this shows that the forest is very much silence, and this his knocking, traveler's knocking, disturb that silence. The traveler is in the poem can be interpreted as a messenger from war, a dream figure, a symbol of human longing, or all of above. So simply, it can be a messenger from war because we don't know really about traveler. He can be a dream like figure also. He can be a symbol of human longing. ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं और कुछ भी रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा. The listener may symbolize judging authorities, passive society, the dead or the past. तो listeners भी तीनों चीजों को सिंबलाइज कर सकते हैं क्योंकि वो अथॉरिटीज जो कि जज कर रही है, पैसिव सोसाइटी हो सकती है, डेड और द पास्ट भी हो सकते हैं. The traveler message is delivered to someone present, to those absent, to the crowd, or via telepathy. So it is for someone to those are absent. The mood created by the forest is safe and familiar, cold and foreboding, warm and cheerful, peaceful and bright. So it is very much cold and foreboding. The use of rhyme in the poem contributes to a comic tone, a hypnotic dreamlike atmosphere, a realistic feel, a patriotic theme. So it is very much a hypnotic and dreamlike atmosphere. So the poem was published in 1912. The traveler can also be seen as a ghost, a symbol of the poet, a lover, or all of above. As I told you कि ये unknown है तो उसको हम कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ट्रैवलर को. एक वॉर पर्सन भी हो सकता है, घोस्ट भी हो सकता है, एक पोएट भी हो सकता है, एक लवर भी हो सकता है. He can be anyone. What does the phrase leave fringed sill evoke? So a garden gate, a decay of nature, a forest dwelling, moonlight falling on marble. So it is forest dwelling. How is the door described in the poem? Wooden and open, dark and invisible, moonlight and shut, covered in ivy. So it is moonlight and shut. Stood thorning the faint moonbeams implies a movement in the shadows, light confusion, presence of many ghostly figures, none of above. So it's simply presence of many ghostly figures. Why is traveler knocking on the moonlight door? So to meet someone as a symbolic gesture because of a promise. तो ये सभी चीजें हो सकती हैं.
बिकॉज हम लोग को कोई एक ऑम्बिगुअस पोएम है, हमें रियलिटी पता नहीं है, तो इट कैन बी एनीथिंग. द ट्रेवलर्स हॉर्स इज अ symbolic of nobility, reality tethered to fantasy, war childlike. So it is reality tethered to fantasy. What theme is reinforced by the traveler receiving no response? War, religion, isolation, and failure to connect. Revolution. So he is very much isolated and failed to connect with the persons who lives inside. What is the significance of the moonlight in the poem? So it helps the traveler to see. It represents coldness and the unknown. It symbolizes enlightenment. It drives the ghosts away. So it represents coldness and the unknown. The poem ends with the traveler entering the house, falling asleep, turning away, write a note. So he turns away. Yeah. Walter Delamere's language in the poem is plain and journalistic, flowery but direct, musical and dreamlike, harsh and aggressive. So it is very much musical and dreamlike. Which of the following best summarizes the poem's central idea? Recollection with the past, unanswered human longing and the unknown, victory over supernatural forces, celebration of rural life. So it is unanswered human longing and the unknown. So thanks for watching. मिलते हैं next video में.